So we'll do some more couple of exercise about the DHCP. So क्या होगा कि जितना हमने ऑलमोस्ट एवरी सिनेरियो देखा। सेम विलेन में कैसे रहेगा तब देखा हमने। और फिर हमने देखा कि इंटर विलेनिंग में रहेगा और राउटर इंटर विलेन हम लोग यूज कर रहे हैं, राउटर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। उसमें आईपी कैसे मिलेगा। फिर हमने देखा कि एक विलेन में आपका डीएचसीपी सर्वर है और मल्टीपल उसमें क्या बोलते हैं, मल्टीपल अदर विलेन है जो उस विलेन में पहुंच के आपको आईपी एड्रेस मिल रहा था। राइट, ये सब सिनेरियो हमने देख लिया। करेक्ट। ये लास्ट बचा है जिसमें ये जनरली कंपनी में यही यूज होता है। तो हम एक काम करते हैं। तो हमें एक चलो दो ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक इस साइड में लगा देंगे, एक साइड ये है मेरी, एक साइड बी है। ठीक है। तो हमें और नोट चाहिए, राउटर्स वगैरह चाहिए। विदाउट राउटर कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो कम से कम दो, नहीं तीन राउटर चाहिए। ठीक है। एक अपने घर का, इसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी, CETE करके है। जहाँ ये जो लास्ट राउटर होता है अपने साइट का उसको बोलते हैं CE राउटर, मींस कस्टमर राउटर। ये तो फिर हम लोग कहीं कहीं कंपनी में एज डिवाइस बोल देते हैं, कहीं कहीं वैन एज डिवाइस बोल देते हैं। और ये जो प्योर होता है इंटरनेट का है। ठीक है। ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। इसको मैं मानूंगा ISP राउटर। ठीक है। ये तो इसको सिंबल चेंज कर सकते हैं हम लोग, एडिट करके सिंबल हम लोग। आइकॉन, हाँ आइकॉन हम लोग कुछ रख सकते हैं। इंटरनेट वगैरह कुछ है तो यहाँ पर क्लाउड, इंटरनेट है, क्लाउड रख दीजिए, चलिए। ठीक है। ये इंटरनेट काइंड आता है। तो यहाँ पर एक राउटर है, यहाँ पर सर्वर रहेगा। और यहाँ पर मैं एक सर्वर बनाऊंगा, हमारे पास कंप्यूटर यहाँ पर होंगे। और यहाँ तक कैसे रिचबिलिटी होगी उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये छोटा सिनेरियो है लेकिन बड़ा भी डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बट सेम सिनेरियो ऐसा रहेगा, हमारे पास राउटर रहेंगे, कपल ऑफ राउटर, मे बी टू राउटर यहाँ रहेंगे, मे बी अदर साइड यहाँ भी बहुत सारे राउटर रह सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सिनेरियो आएंगे। बट ये समझने के लिए काफी है कि हमारी यहाँ से यहाँ तक रिचबिलिटी कैसे हो रही है और हमें आईपी कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में पैकेट को थोड़ा समझेंगे। आई होप इज क्लियर, राइट, कि हम लोग हमने क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं। राइट। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम इसको सर्वर मान लेते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। Yes, yes. हम्म। तो कोई कंफ्यूजन हो, आई थिंक लास्ट क्लास में जो नहीं था वो लास्ट वीडियो देख के आया होगा। आई होप नित्या, आई वॉज मिसिंग यू, तो आप नहीं थे वहां पर। तो फाइन, नो वरी। बट ट्राई करो, क्लास मिस मत करो, नहीं तो आगे वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, आज भी दो इसको क्रिएट करेंगे और दोनों पीसी को आईपी मिलना चाहिए। ठीक है। तो डिफरेंट VLAN रहेगा आज भी। और यहाँ पर हमने क्या करना है आज, यहाँ पर SBI यूज करना है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है, आपको पता है SBI, राइट, इंटरव्यू में डिटेल में डिस्कस किया था ये सब चीजें। तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा। हम इसको सारे सिनेरियो को ऑन करते हैं। ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है कि ये जो VLAN है इसको 10 में डाल देंगे। ठीक है। ये वाला पीसी को VLAN 20 में डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमें दो इसको क्रिएट करना है, एक VLAN 10 के लिए, एक VLAN 20 के लिए। ठीक है। और हमें यहाँ से होते हुए, यहाँ से DHCP होते हुए यहाँ पर जाना है और आईपी पिक करना है। और यहाँ से जाके यहाँ पर आईपी इन दोनों पीसी को देना है, इसको भी और इसको। क्लियर है? ये मेरा टारगेट, हमारा टारगेट है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, साइट ए।
जनरली कंपनी में यही यूज होता है। सर्वर आपका कहीं और होता है डेटा सेंटर में, इसको बोलते हैं साइट भी, ये तो डेटा सेंटर साइट ऐसा। यहाँ पर एक नहीं हजारों सर्वर होते हैं डेटा सेंटर में, और हजारों डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस राउटर और मल्टीपल डिवाइसेस ऑन लेयर वाइज लेयर। तो हमारे पास डेटा सेंटर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल डेटा सेंटर है एक, फिर हमारे पास VX लैंड टेक्नोलॉजी का डेटा सेंटर है, फिर एक लेटेस्ट है ACI। डिफरेंट डिफरेंट वेंडर में डिफरेंट डिफरेंट कहते हैं। ACI एप्लीकेशन सेंट्रिक आइडेंटिफायर, आई समथिंग इज देयर। So those are the data center technology which they are using to configure. Generally, you will see this one and this one. Traditional, very rare you will see nowadays, क्योंकि ये अभी यूज में नहीं होता। एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर आई गेस। ठीक है, ये हमारा गोल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है आज, राइट? एनी डाउट बिफोर स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दोस थिंग? या। ओके। तो पहले जब भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, नया डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कभी लैब आप कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले ये डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करो, फिर इस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करो, फिर इस डिवाइस पे, फिर इस डिवाइस पे, लाइक दैट ऐसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? तो ये VLAN है, तो इसको VLAN 10 में डालेंगे, इसको VLAN 20 में। पहला काम यही करते हैं। चलो स्विच नंबर 1 ऑन करता हूँ, ठीक है? साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। Otherwise, getting the things what we are trying to। Yes, I'm getting. और यहाँ पर स्विच नंबर, और स्विच नंबर 2 में जो विलेन है, हम बाय डिफॉल्ट विनर रखेंगे, वहां पर कोई भी विलेन हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर साइट पे विलेन सेम हो सकते हैं। यहाँ पर आपका विलेन सेम हो सकता है, विलेन सेम हो सकता है, बट जो यहाँ पर कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेंगे, फॉर एग्जांपल उसकी जो IP, फॉर एग्जांपल यहाँ 10.0.0.0.0/24 यूज कर रहे हो एग्जाम्पल, यहाँ पर 20 यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ भी 10 और 20 ऑन द सेम VLAN आप यूज नहीं कर सकते। VLAN सेम हो सकता है, बिकॉज इस लेयर टू डिवाइस इट विल नॉट go via this device. Here encapsulation will happen. That's it, right? After that, it will VLAN information will not move. We have a Q&Q technology, which can be used the VLAN to VLAN, but I have never used and I have never learned that. But I heard like if you have same network, we can use Q&Q technology to pass traffic from one side to other side. Then ISP play the big role here. ISP will provide the facility to for Q&Q traffic, which I am not sure is correct or not, but what I heard like is the technology. But generally, I have not seen people are using. So I have whatever company I have worked on, they are not using. So generally, you will see always the separate network. One side you will see as a separate network. Second side you will see separate network. VLAN will be same. For example, VLAN 10, 20, 30, whatever they are using, it will be same. But network will be always different, because network will travel throughout the data center, throughout the your entire company actually, entire office, or we are calling as an autonomous system. Entire automation, autonomous system, this network will run. Okay, so you should not use different same network on the different side, because it will give the conflict of IP addresses in routing tables. Okay, so generally you will see same VLAN but different networks. You will understand more about the networking. I mean routing and all. So don't worry. So let's do that. I will not configure anything on this device. I mean, we will keep as a default VLAN one. Okay, we will configure here only. So first, you can configure enable config field. If any doubt, any question, please uh, raise hand or just ask the question. Okay.
because this thing will not repeat again and again, because once new batch will come up, then again we will get the chance to learn those. But for these two batches which is going on, both, I don't think so. I will repeat. Anyway, so switch number one. So VLAN port number 01 and 02. Just the interface EI0/1. Switch port mode access. Static access I'm going to configure. Switch port access VLAN, you can set 10. Okay. VLAN 10 was not configured, it's configuring that. We have another way. This is the way, right? We can VLAN 2 should be VLAN, hold on, should be VLAN 20, not 10. Okay. So we have port number 1, then switch port mode access, switch port mode access, mode extend. Right. Yeah. Once this switch configuration is done, this interface we will make as a trunk. Okay, GI0/0. So go ahead and make this trunk interface GI0/0. Switch port trunk encapsulation dot one q. Use the standard one, and switch port mode trunk, and switch port trunk allow VLAN 10 to 20. Okay, 10 and 20. 10 to 20 also is okay. Switch configuration is completed now. Move into router. This one, this router is, uh, and if you want to communicate within the system, I mean, VLAN 10 to 20, then you have to configure SBI here, right? Let's do that as well. Okay. Interface VLAN 10. Interface VLAN 10. Okay. IP address they will use as 10 gateway here only, or we can use the gateway here. There is a two-way. So let's keep it simple then, because you will confuse. Here I will use another protocol to run this. If you want, I can show you, but leave it. We will discuss this later on routing much. So keep is trunk as of now. If you want to communicate, we will use pure layer 2 switches here. We can use 3, but use the 3 only. Here I will configure the gateway. Okay. तो चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इंटरफेस GI0/0 पे जाके हम ट्रंक तो बना ही दिए थे, राइट? कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। तो अब हम बात करते हैं राउटर की। चलो राउटर में लॉगिन हो जाते हैं। ये राउटर R1 है, इसको साइट ए मान लेते हैं, इसको साइट बी मान लेंगे, चलेगा? नो। ओके। इनेबल कॉन्फ़िग सी होस्ट नेम साइट ए, डन। टू राइट एंड कॉन्फ़िगर टू गेटवे FA0/1. So interface FA0/1. Okay. No IP address. Router on stick. No shutdown. This command is very important because router port by default is shutdown mode. So we need to enable the port first. And then we need to configure the dot subinterface dot 10. Then sorry, dot 10 IP address 10 dot 10 dot 0 dot 0 dot 0 dot 0 dot 1. 1 will be the gateway. Okay, its command will not accept. Encapsulation dot 1q will enter. Now I did it. Yeah, done. Okay. Now configure VLAN 20 as well. 20. Encapsulation dot 1q 20 here. It's a VLAN number.
and then IP address. But then, do right. All good. Now this is configured. Okay. Now I need to enable the routing protocol as well, but I will do later on. Now configure this port. So what I will do, I will consider it like R1 cited and R2 and R3. So what I will use the IP address 1 and 2. I will use 12.0 IP address 0.0/24, and here, because here we will assign dot 1, here I will assign dot 2, here assign dot 2, here dot 3, like that. R3 dot 3, R2 dot 2, both the interfaces like that. It's a meaningful name, right? That's what I will assign like that IP address. So okay. You will make practice, don't worry. I will repeat again and again. This IP address FH0/0. Go on router, configure IP address, interface FH0/0, IP address. I will use 12.1.1.1 dot by dot by dot zero. No shutdown. Yeah. This interface IP configured. Now log in here. इसको हम लोग बोलेंगे IS. इसका नाम दे देंगे IS राउटर. Enable config key, host name IS in internet service provider kind of SP. I will give IP and also interface FH0/0, IP address 12.1.1.1 2 here because router 2. इंटरफेस में भी नहीं है इंटरफेस उससे Okay, okay, my bad. फाइंड गलत है Give me 1 moment, I will correct it. Yes, no second. So IP interface is, yes, it's configured. FH0/1 IP address will be, and between R2 to R3 we will use 23. 1.1. Here is it. I can use /30 network as well, but here dot 3 will not allow, right? Because if I will use /30 network, for example, let me explain as well. Maybe you can go, you forget. No. Uh,